वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका बाजार और अब आपका बाजार में शुरुआत करते हैं हमारे खास सेगमेंट की फेस्टिवल बोनांजा। और इस खास सेगमेंट में आज हम बातचीत करेंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस से। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर और ब्लू स्टार बी त्यागराजन हमारे साथ मौजूद है। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय हमें देने के लिए। आज के इस फेस्टिवल सीजन की अगर बात करें तो खास तौर पर कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस के लिए काफी इम्पैक्टफुल होता है। आपके लिए अगर आपके सेक्टर की बात की जाए या फिर आपकी कंपनी की बात की जाए, किस तरीके की डिमांड की आपको उम्मीद है आगे आने वाले सीजन से? Good morning. Thank you for talking to us. It was a great season in store for us. That is what is the feeling I have got as of now after witnessing the Onam sales. Last year we had grown by over 70% and more than 50% offtake was there during Onam. Because of last year growth, we were trying to see, our assessment was the growth will not be that much, but the market surprised us very much. With 50% plus growth during the Onam season, okay. I am confident that the forthcoming Puja season or the Diwali up to New Year should be a great season ahead. Okay. Our own internal goal is that we will grow by at least 30% during this period. मिस्टर त्यागराजन, आपने इनफैक्ट काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दी कि ऑलरेडी जो फेस्टिव सीजन की डिमांड है वो ऑलरेडी आनी शुरू हो गई है। ओनम फेस्टिवल में 25% के आसपास की आपकी प्रोजेक्शन थी, लेकिन 50% प्लस ग्रोथ आई। दैट इज वेरी गुड। तो यानी कह सकते हैं कि जो पार्टी पीरियड था कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज के लिए वो ऑलरेडी अप्रैल ऑनवर्ड शुरू हो गया था। जब समर्स का ऑनसेट टाइम से पहले हुआ था वो अभी तक कायम है। तो एक चीज मैं यहाँ पर जानना चाहती हूँ कि अक्टूबर से दिसंबर को हम नॉर्मली फेस्टिव सीजन में प्लेस करते हैं, तो अक्टूबर से दिसंबर के दौरान परसेंटेज टर्म्स में कितनी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर एक रफ आइडिया आप दे पाए? As I mentioned, the growth anticipation is somewhere around 30% plus. It's not only the consumer sentiment, we also have the pay commission related arrears that is going to happen. And as I mentioned to your channel in the past as well, in India, people buy the mixer grinder, color television, then refrigerator, then washing machine, then two-wheeler, four-wheeler, air conditioner comes as a last item. There are a lot of consumers who own four-wheelers, but they do not have the air conditioners. The second thing that is happening is that the second-time purchase. People are buying the air conditioner for their second bedroom. Right. This is the other phenomenon. Most importantly, we have a recent study which shows the average age of the buyers are dramatically coming down. Those days it used to be 40 plus being the decision makers, but now between 25 to 35 there are many decision makers. The young generation is buying for their parents or for their children. That is the Indian culture, I suppose. This is the reason I have been also saying during the festival season we have to watch out how many air conditioners will be sold through e-commerce portals. Exactly. All consumer durables put together constitute around 12% of through e-commerce portals. Air conditioners bear only 5%. We anticipate significant growth from e-commerce channels as well during this festival season. So I expect at least 30% growth. I expect average age of the buyers coming down. I expect e-commerce portal playing a significant role. Right. Mr. Tyagarajan, my next question is split into two. First, I want to know that what kind of offers and discounts would you be offering in the upcoming season, if at all? And second one, जो आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बात करी अभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की और काफी ग्रोथ की आपको उम्मीद है इस प्लेटफॉर्म को एक्सपोज करते हुए, तो क्या मार्जिन्स पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? बिकॉज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे यूजुअली रिटेल आउटलेट से कम प्राइस पर सेल होता है, तो क्या उससे कुछ मार्जिन्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा? First, I will answer the margin question. The prices as well as margins are going to be stable for the whole year.
But given the fact that June, July sales were somewhat lower than expectations after a great summer season, months of April and May, there was some inventory build-up. So there is some discounting that is taking place, but that is not going to affect the overall margin outlook. We have always said that the operating margin will be in the region of 9.5 to 10.5%. Okay. The input side is very stable. The raw material prices or the exchange rate, I do not have any concern at all. Therefore, there may be some discounting that may be taking place to begin with, because all of us will be interested in liquidating all our stock before the next summer season, which means that by November, December, we should have exhausted all the inventory. Coming back to your earlier part of the question with regard to offers, yes. I think the usual thing of stabilizer free, or I am giving you some foreign travel scheme, or I am trying to drop the prices, or installation free, those things are boring to me, and as a brand, I don't think that is the thing that we want to pursue. Our interest is that the consumer gets the best product in terms of technology, and it is a future-ready product, like the Wi-Fi enabled air conditioners or inverter air conditioners, whether the selection is right, installation is right, and also the consumers are increasingly very clear. This discounting or by and giving an offer, they are saying what is the price to me or the life cycle cost to me. So we are becoming a mature market, that is my sense. And if the young generation are going to be the key decision makers, they are not carried away by some stabilizer being given or something like that. Rather, I will make my air conditioners stabilizer free, in the sense it will work without a stabilizer, or it is future ready product. This is how our direction is. I am not really worried about the schemes that are prevailing, that may be for pulling the crowd into the showroom or something like that. Chili, thank you, Mr. Thiagarajan, for being on the show, and all the very best for the upcoming festive season. तो यहाँ पर कई सारी हैं बातें कही मिस्टर त्यागराजन ने. इन्होंने कहा कि फेस्टिवल सीजन में ये 30% तक की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ऑलरेडी ओनम फेस्टिवल को काफी स्ट्रॉन्ग रिस्पांस मिला है. 25% की इनकी प्रोजेक्शन थी, लेकिन उसके मुकाबले 50% की ग्रोथ देखी गई है. और मार्जिन्स पर उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट बात कही है कि हाँ, वो ऑफर्स दे रहे हैं, ई कॉमर्स कंपनीज के जरिए भी वो काफी प्रोडक्ट्स बेचेंगे, लेकिन इससे मार्जिन्स उनके इम्पैक्ट नहीं होंगे. और इस पूरे साल के लिए जो ऑपरेटिंग मार्जिन आउटलुक है उनका, वो 9.5 से 10.5% के आसपास का है. तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहां से आगे चलते हुए भी. और स्टॉक अगर आप देखें तो 537 के लेवल्स पर 0.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है. दो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस पर कमेंट ले लेते हैं और साथ ही उनकी फेस्टिवल बोनेंजा पिक्स भी जानेंगे. लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है. जब वापस आएंगे तो दोनों जानकारों की चॉइसेस क्या है इस फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखते हुए, ये आपको बताएंगे. आप देखते ही आपका बाजार.